So we are starting with this chapter today, web applications. Session 1 is accessibility tools. Accessibility tools are computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all, irrespective of any disability also. This is mainly a software issue. So basically, like if everybody can easily use the hardware devices of the computer because you can touch, you can feel them. So you can easily use the hardware devices. But the problem comes if you are disabled, then the problem comes with the software because those people are not very much comfortable with the software. So uh, accessibility options are specially made for these people. However, when a combination of hardware and software, it enables a person with disable or impairment to use a computer. This is known as assistive technology. Now, what are these features? Types of impairment that impact computer usage. Now, if a person is not means he is not mentally very strong, so cognitive domain or visual impairment he is having, auditory, he is not able to listen properly, or maybe the fingers and the hands are not moving properly, or in speech if he is having any problem. So all these problems may occur. So accessibility option in the control panel are used to customize the way your keyboard display or mouse will function. Many of these features are useful for people with disabilities. For example, like for the ease of keyboard, so that you can easily use keyboard, there are these three keys which you can on: sticky key, filter key, and toggle key. What is the use of sticky key? Sticky keys, it allow users to press and release a modifier key such as shift, control, alt, or window key, and have it remain active till any other key is pressed. तो नॉर्मली हमारे को जब प्रेस करना होता है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी फॉर कॉपी एंड पेस्ट, ऑल दीज शॉर्टकट्स वी यूज टू यूज, कंट्रोल प्लस ए फॉर सिलेक्टिंग ऑल। तो स्टिकी की का काम होता है बेसिकली ये इन कीज को एक्टिवेट रखती है तब तक जब तक आप कोई नेक्स्ट की नहीं प्रेस करते, तब तक वो एक्टिवेटेड रहती है। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स ओपन कंट्रोल पैनल। Okay, and go to ease of access, ease to access center, keyboard, make the keyboard use easier. First, let's on the sticky key, set up sticky key, turn on sticky key, apply. Okay. So let's say if I have to press everything on this slide, select everything on this slide. So I'll press control first. Sticky key is on. So irrespective of if I'll press control plus A together or not, next key which I'll press will impact what I'm doing. So control A I am pressing now. So it is automatically getting selected. Everything is getting selected, which is there on this slide. So because it is already written, let's check it in a notepad. You will be able to understand it in a better way. Okay, so I have pressed control key now. Now next key I'm going to press is A. Wait. Sticky key is, I think, off now. Turn on. Voice is not coming. It means there is some problem.
Sticky key is not. It's off. Turn on sticky key. Apply. Okay, now let's go to the notepad. Control and A. I have not pressed Control plus A together. I have just pressed the Control key first and then I am pressing on A. So automatically the key will remain active. Control key will remain active till the time I will not press the next key. So this is how it works. Let's try the next key now. Okay. Next key is filter key. Filter key, what it do? It is an accessibility function that tells the keyboard to ignore brief or repeated keystroke, making typing easier for the people with hand tremor. So जिनके hands vibrate करते हैं उनके लिए थोड़ा सा easier हो जाता है if the filter key is on. Let's on the filter key now. So this is filter key. Turn on repeated key and slow key. There are two options in the filter key option. Turn on bounce key. Bounce key means if you are unintentionally bounce your finger on a key, bounce key will ignore repeated keystroke for a specific amount of time. For example, let's say 0.5 seconds तक आप उस key को अगर बार बार press कर रहे हो because of the vibration in your fingers. So if you are pressing it again and again, it will ignore all those keystrokes. आप ये time को increase or decrease कर सकते हो depending upon your movement of your hands. ठीक है? And turn on repeated keystrokes and slow key. The computer will ignore brief keystrokes according to the time limit set according to you. तो इसमें हम अगर हैंड को मूव नहीं कर रहे हैं, अवॉइड एक्सीडेंशियल की स्ट्रोक. हाउ लॉन्ग यू वांट टू होल्ड डाउन अ की बिफोर योर कंप्यूटर एक्सेप्ट द की स्ट्रोक. कितनी देर तक आप प्रेस, मतलब ये डिपेंड करता है टोटली आपकी मूवमेंट पे. तो कितने सेकंड्स का टाइम आप लेना चाहते हो. 1 second, लेट्स से इफ आई एम टेकिंग, even if I'll keep on pressing a key for 1 second, then also it will not type that word again and again or that alphabet again and again. Type text here to test the setting. Okay, let's say if I'm pressing on A, ignore all repeated keystrokes. Apply, let's apply this. Let's try it in Word, Notepad. Because I have taken 1 second only. Let's change the setting. Let's make it 5 seconds. Apply. So till 5 seconds it is getting, it will wait for you. After that only next alphabet will get printed. You can increase the time span and you can see the change also. Ignore all keystrokes for 2 seconds. How long should the computer wait before accepting subsequent keystroke? Till 2 seconds. Apply. Now it will wait, it is getting waiting for 2 seconds. After that, again, the next alphabet will get printed. You can increase the time span according to your requirement. For 20 seconds. Right? So in this way, it will control for the number of, for the time period for which you are pressing a keystroke. Okay, okay, now let's off it and try the next one.
Next is the toggle key. What is toggle key? It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disability. Toggle key is turned on. Computer emits sound clue for locking keys. जब भी आप प्रेस करोगे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनमें से कोई भी की जब आप प्रेस करोगे तो it will generate a sound for you. So it is for basically those who have vision impairment, so they can listen to the sound and they can conclude that this type of key is pressed. So it creates a different voice for every key. High sound emitted for the key when it is switched on, and low sound is emitted when it is switched off. Listen now. Toggle key. Apply. So I am going to press now caps lock. This is off. This is on. Off. On. Numlock key I don't have. And what else is there? Scroll lock. Scroll lock key also I don't have. Right. I have only caps lock key in my keyboard. Okay. Next is ease of sound. For the sound symmetry is designed to help users with auditory impairment, those who are not able to listen the sounds. Sound sentry generates visual warning such as blinking of title bar or a flashing of border. कई बार होता है हमारी स्क्रीन्स पे एरर आते हैं, तो वो एरर जो होते हैं वो साउंड से पता चलता है कि दिस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस. तो वो साउंड की जगह पर यहाँ पर आपको फ्लैशिंग बॉर्डर्स या ब्लिंकिंग टाइटल बार दिखाई देगी वेन एवर कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड, जब भी कंप्यूटर में से कोई आवाज आएगी. तो लेट्स ट्राई दिस. Make mouse easier to use. Make it easier for manage window. Activate a window by hovering over it with the mouse. तो जब विंडो एक्टिवेट होगी, प्रिवेंट विंडो फ्रॉम बीइंग ऑटोमेटिकली अरेंज. माउस सेटिंग्स आ रही हैं इसमें. माउस की, टर्न ऑन माउस की, यूज न्यूमेरिक कीपैड और माउस अराउंड द स्क्रीन. ये तो पॉइंटर्स वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इसमें ये ऑप्शन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्लो साउंड. इसकी सेटिंग्स कहाँ से होती है, दिस आई नीड टू चेक. नेक्स्ट इज ईज टू डिस्प्ले. इसमें आप हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी फीचर्स ऑफ और द विजन इम्पेयरमेंट, मतलब जो लोग नहीं देख पाते प्रॉपरली वो अकॉर्डिंगली कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन का. ठीक है. एंड अच्छा ये रहा माउस की. ईज ऑफ माउस में माउस की इज एन accessibility feature that assists people who have difficulty using mouse. This option uses keyboard, especially the numeric keyboard, for pointing the devices instead of mouse. तो mouse use करने की जगह आप इसको on करके using your keyboard only you can move your mouse on the screen. ठीक है. एंड सीरियल की क्या होती है? सीरियल की एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू इफ यू आर नॉट एबल टू press the keys from the keyboard or if you are not able to use mouse, so using this device जो कि एक सिपर की तरह होती है, you can blow air from your mouth and you can operate it as a mouse on your screen. So लेकिन इसके लिए ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल माउस यूज ही नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मूव देयर फिंगर्स ओवर द स्क्रीन और दे कैन नॉट यूज देयर हैंड्स, तो दे कैन
use this device to use it as a mouse. राइट अब एक बार ये सारे फीचर्स देख लेते हैं हम जो कंट्रोल पैनल में हैं। इसके अलावा दिस वाज द पार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं विच मेक्स इट इजियर फॉर अस टू यूज कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले। तो विदाउट डिस्प्ले, यूज अ कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले, टर्न ऑन नरेटर। तो उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी, तो आपको देखना नहीं है। नरेटर आपके लिए ऑन होगा, नरेटर आपके लिए सब कुछ बोलेगा। जो भी नरेटर रीड्स अलाउड एनी टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, जो भी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, इट विल नरेट यू एवरीथिंग। इवन जो वीडियो प्ले हो रही है स्क्रीन पर, आप इस वाले बटन को ऑन करोगे तो जितनी भी वीडियो आ रही है उसको भी वो डिस्क्राइब करेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वीडियो, राइट। एडजस्ट टाइम लिमिट एंड फ्लैशिंग विजुअल्स। जो भी टाइम एडजस्ट करेगा, जो भी विजुअल्स आ रही हैं अननेसेसरी एनिमेशंस को उसमें से रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये नरेटर हमने लास्ट टाइम ऑन करके देखा था। वी कैन ट्राई अगेन, बट इसके लिए आपको नरेटर को narrator dialogue. So Okay, whatever the button, window will Alt pop up plus or O, whatever the heads up. screen will open on your Narrator screen, keyboard it will narrate changes. everything for We've you. updated the exiting narrator. Right. Next is after narrator, make computer easier to see. इसमें आप अपना मैग्नीफायर ऑन कर सकते हो, हाई कंट्रास्ट थीम यू कैन यूज। ठीक है, ऑडियो ये सब ऑडियो डिस्क्रिप्शन वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट इज यूज कंप्यूटर विदाउट अ माउस और अ कीबोर्ड। You can use on-screen keyboard or you can use speech recognition. आपको speech recognition कैसे करना है? For that you have to train your computer. Let's say start speech recognition. Okay, computer, off this screen. Turn off the screen. Close this window. Close control panel. Close control panel. Close control panel. Close this window. Open notepad. There is some problem in my instructions. There is nothing wrong with this. So whatever I'm speaking now, it is getting typed also in the notepad. Right? Like this, this is how it works. So ये work करवाने के लिए आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करवाना जरूरी होता है, सो दैट योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बिकॉज अब देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई और वर्ड बोला था शायद और ये इसने कुछ और टाइप कर दिया है। तो इसके लिए आपकी पहले आपको अपने कंप्यूटर को थोड़ा फ्रेंडलीनेस करना पड़ेगा आपकी स्पीच के साथ। उसको रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए कि हाउ यू यूज टू स्पीक द वर्ड्स और कितना स्लो बोलना है, ताकि आपको भी समझ में आए कि कंप्यूटर को क्या चीज, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, देन सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको भी समझ आएगा और कंप्यूटर को भी समझ में आएगा। तो इसके लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यहां से ट्रेन योर कंप्यूटर टू बेटर अंडरस्टैंड यू, ये चीज करनी कंपल्सरी होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज use text or visual alternative for sound. Okay, this was the option we were searching for earlier. इसमें कभी भी जो कोई एरर आती है स्क्रीन पे, तो इंस्टेड ऑफ विजुअल अल्टरनेटिव फॉर साउंड, तो इसमें जब कोई एरर आती है तो नॉर्मली हमारे को एक साउंड सुनाई देती है कीबोर्ड से, उसकी जगह पर विजुअल मैसेजेस डिस्प्ले होंगे
though for those people who are not able to listen, right? And next is make it easier to focus on task. अच्छा, इसमें ये सारी कीज आ जाएंगी. You can on the keys and you can work accordingly. Make touch and tablet easier to use. Because I don't have my, this is not a touch screen keyboard, so this feature will not work, right? So I hope it is clear to everyone what are the different types of accessibility features which are there. सबसे useful जो feature है that is voice recognition, जिसके through आप अपना पूरा computer operate कर सकते हो without even मतलब using your hands. ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यू हैव टू ट्रेन योर कंप्यूटर फर्स्ट, एंड विच कैन बी डन with the help of this command: train your computer to better understand you. Okay, so I think it is clear to everyone what are the all different types of accessibilities option which Windows is providing you.